this project. Okay, but you must be knowing what is a project. So can you help me that what is a project? What we call as a project? Project is a continuous sequence activities uh, uh, to to complete a task in a professional manner. Hmm. Actually, yeah, and before starting, also, I would also like to say this that this is not something a formal learning or training class. This is just a engagement and discussion. So you can stop me anywhere and you can ask any questions anywhere. Okay, related to what we are doing. So please don't hesitate to ask questions. The more questions you ask, the more learning you would get. Okay. Yes. Right. Yeah. So I'm starting. So what is a project? First of all, we need to understand what we call as a project. Project. Let's go by the definition. So it is a temporary endeavor that produces a unique product, service, or result. So you must be focusing on temporary endeavor. It is something producing unique product, service, or result. Why we do projects? We do projects to bring something to make something, to manufacture something. Let's say we have to build an aeroplane, so we can do a project for it. Okay. Let's say we need to provide some service to our customers or to general people, then we can have a project for it. And it is a temporary thing. Temporary. Why it is temporary? Because it must be having a start date and an end date. We cannot say a project will go endlessly, then it is not a project, then it is something else. We will discuss what it is which will go endlessly. But a project, whenever we start a project, we usually have a start date when we are starting, and we usually have a end date in our mind, that when we complete this date can change, the project can extend, but it must be having an end date. It is a temporary thing, not a permanent or not an uh, ongoing thing every time, right? In the organization, we have projects and they have an ended, started and ended. So they are temporary in nature and has a definite beginning and ending. Can be part of a large program or portfolio. We will understand this. So you understand what is a program and what is a portfolio then, or not? Portfolio means project related portfolios Yeah. can Okay. be part of large program or portfolio. Yes, Hello, yes, Nanda. yes. Yeah. So, yeah, focus on these keywords here: unique, temporary, and progressively elaborated. So, unique, temporary, we have already discussed. Unique is means that it is producing a unique product, service, or result, because we are doing the project for the first time. If we have produced something earlier, and we have to do that thing, a same kind of thing, then we would not be saying that we are doing this project. We would just be like doing we will just be producing that thing again. Okay. So unique and progressively elaborated. Progressively elaborated is also important here, because things get, as the project moves forward, things get elaborated and things get better. Okay. We may not understand everything in the beginning, but but after 2 weeks we may understand better, and after more 2 weeks we understand better about the project. Okay. That is how, and that is why things get refined, and requirements will also change. Timelines, schedules can also change. So things are progressively elaborated in the project. It's not like on the day one we know everything. And it is the thing with all the things. Whenever we are planning or we are thinking about doing anything,
let's say if I try to have a set up a business today, so I'm not clear, I will not be clear on the day one that what I will be doing, what will be the my target customer. No, it will take time. Things will be progressively elaborated, same as in the case of project, right? Are we on the right page, the same page? Yes, it is. Yeah. So these keywords are here is important, temporary and progressively elaborated. So to repeat the definition of the project, that it is a temporary endeavor and it is something which gets progressively elaborated, and then things will clear. And this thing, program management. So what is a program then? We have three things: project, program, and portfolio. We understood what is a project, but then let's say then we move forward to what is a program. So program is first of all, let's read the definition: group of related projects managed in a coordinated way to obtain benefits and control not available from managing them individually, must be of some value add in managing them together as a program. A project may or may not be part of a program. The program. So what we are saying here, that let's say take an example of Taj Mahal. So let's say we have to uh, give the tender of um, cleaning the Taj Mahal, okay, to some vendor, okay, right? It's a huge project. It's a huge project. So if we just give the tender to one person, to one vendor, it may be difficult for us to manage, to control. It may be difficult, it will be difficult to that vendor also to manage things. But if we focus separately, and if we say, okay, we will give the cleaning of the west side of the Taj Mahal to ABC Waste Management Limited, and then the next side will be given to XYZ Consultant Limited. So here we are dividing the huge work into smaller work which are more manageable, and uh, keeping them together, keeping them under one watch, under one big program is helpful. They are not separate things. They are not things which are not interlinked or separate things. We want our whole Taj Mahal to be clean. We just don't want कि एक साइड उसका क्लियर हो, बाकी सब गंदे पड़े रहे, नहीं, वो सब रिलेटेड है. बट since it is a huge project, we are dividing it into smaller projects, right? Yes. So a program will have the combination of small projects which are divided, because in this way they are like to manage and to control these projects. It would be better and easier for us. And if we just go in a huge project, then things will become cumbersome, or things will become problematic, right? So program means you tell the whole process is divided into parts. That's called program management. Sorry, can you please repeat? The start from the start date till the end date, the complete project have to be divided in uh, part wise. Yeah, programmed in part manner. That is No, called no, no, program. no. That's not what I'm saying. What I'm saying is that let's say take another example to build an aeroplane. Okay. Now building this aeroplane will have different features. Like we have to build the engine, first of all. We have to take care of the communication system. We have to take care of the wheels. We have to take care of the arrangements, right? We have to install the screens as well. Okay. So what do you think? Is this work can be given can be doable in one project? No. Can we just say build an aeroplane and to someone, and we can expect the that he will be able to do everything? And take an example.
you as an owner of the aeroplane company, you will ask one person or one team to build the aeroplane. Then you will be taking them taking the updates from them. Okay, what is happening in the project? So do you expect them that they will be able to give you updates about everything? That okay, we are on the engine side we are 60% completed, and then on the wheel side we are 70% completed? No, because not one team, not one company has the expertise of everything. And you as a one person, as a sole owner, will not be able to manage things with one way. That is why we have managers. That is why we divide the work, that you'll take care of the accounts department, you'll take care of the HRs, because that is how we will divide the huge work into smaller work. So in our example of aeroplane, what we will be doing, we will be calling making the aeroplane or constructing the aeroplane as a one program. And this huge program will be having smaller and smaller projects in it. Let's like engine manufacturing is one project, wheel is one project, seating arrangement is one project, communication is one project. So these the aeroplane development of aeroplane is having four smaller projects, and we will be calling it as a program. So projects are all comes under the program, not programs. Yeah. Yeah, Okay. Okay. yeah. Projects come under program, but not every time, not necessarily. Projects can be executed individually as well, but it is our choice to keep them in a project, in a program, depending on the nature of the work. If we join them together, if we keep them under one watch, under one program, then it would be beneficial for us, we keep them. If we think that no, executing them separately as a they have no relation and we will execute them separately, so it is our choice. Okay, Yes. you understand. Yes. In big organizations, take example of big organizations. So they will not be doing all the work in just one way. No, a big organization have customers of different field. They will be having let's use some page, so that it will be clear to us. I take an example of HUL. Okay, Hindustan Unilever, right? You know about this company? Yes. Yeah. So it is into FMCG industry, and it produces so many products. So you know about them, that they have different products. Like they are doing they ये टूथपेस्ट भी बना रहे हैं, ये सोप भी बना रहे हैं. Yeah, okay. So, do you think that they execute their whole work in one way? Okay, we will be doing everything. No, they will be having different portfolios, different programs, and different projects. Okay, so let's say they are making Dove, and then they will be having a separate project for making another soap, which is like what other soap they make. Let's say they are making Nirma. I don't know the Nirma is HULs or whatever, but yeah, this way things are getting clear to you, projects and program. But things will be more clear to you. Everything will be clear once we discuss this portfolio thing. Okay, so let's go into portfolio. Then, as a combination of the project, program, and portfolio, things will be clear to you. So yeah, take this example. Take this image. Program is a combination of smaller projects. Okay. Now portfolio management. Portfolio management is a collection of projects, programs, subsidiary portfolios, and operations
managed as a group to achieve strategic objectives, collections of projects, programs. So now portfolio के अंदर programs आएंगे. Who we lost, Naveen? Yeah, he will join again, sir. I won't. Yeah, let's wait for him. Yeah, Yeah, so I'm saying कि पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स आएंगे, प्रोग्राम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं. Got it? the portfolio is a collection of projects, programs, subsidiary portfolios, operations, management, products. No, sir. Portfolio. Tell me again, sir. ओके. सो पोर्ट अभी आप इतना समझो सिर्फ कि पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स, पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स होंगे और प्रोग्राम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे, बराबर? Okay. ठीक है. अब now we will move to some example so that things will be clear to you. So let's say this company, Boeing company, okay, which manufactures their aeroplanes, right? Sir. Hmm. So they'll be having one portfolio. Let's say they'll be having one portfolio fly high, and they have decided to they have decided to build some kind of aeroplanes in it, mostly catering to business class. Let's say it's all we are just making things to understand. So they'll be having this. Let's say they build this aeroplane in this portfolio, which is Boeing 747, which only caters to business class. Okay. Then they say like one aeroplane in this portfolio is not enough. We will build more aeroplanes in this portfolio, similar kind of aeroplanes, which will do the similar things. Actually, we have more demand of these kind of aeroplanes, so we will make a similar kind of aeroplane. Okay, that is why it comes under this portfolio, because it is similar to it. It is some similar to what we are doing. Okay, so they'll make another like 659, and then they'll be and then after some time they say no, we'll make one more. So Boeing 740, they have now three airplanes. So while doing this, while making this 747 and 659, these are called programs. And to build those things, we are having smaller projects like as we have discussed, like engine, engine manufacturing. Okay, understanding small programs into one. Communication system. So all these programs are executing these projects. Now take understand this fly high as a portfolio, and understand this Boeing 652 and all this as a program. This is program. Uh, Understanding Sir, or not getting clear still. Huh? Understanding or any doubt? one more thing, sir, you tell. Fly high is the portfolio. Yeah. The program Boeing
three types of goings or comes under portfolio as a program. As a program, yeah. As a And program comes under the portfolio fly high. hmm, And the engine and manufacturing and communication system, the separate part which has worked as a projects, comes under the one program Boeing 747. yeah, The three as shown, the program, sorry, the project also comes under the portfolio. In which cases that happens? yeah, yeah. Projects also come directly. Project can also come under a portfolio. Why and how? Because let's say we have built this Boeing 747 first of all, then this uh, we will be starting a project, let's say maintenance of this. We have encountered some problem in the engine of 747, so we have started one project with the name maintenance. So this will come separately in the portfolio of fly high, because we are catering to this aeroplane which comes under this portfolio fly high. But this is not a but we don't need a program, we don't need to segregate, we don't need to divide this maintenance thing into smaller things, so we will be calling this as a project. Okay. Understand? Okay. So Naveen, are things clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, once again, Oh, please brief the Hindi in portfolio. in Hindi, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, we will do again with another example. लेट्स से देयर इज सम अब हम बात करते हैं किसी कंपनी की जो कि है एबीसी कंपनी, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. ये जो है आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है? Okay, sir. इसके पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। इसके पास ये जो है आपकी एक जो है ऐसा क्लाइंट है जो कि हेल्थ केयर डोमेन में भी करता है। इसके पास ऐसा भी क्लाइंट है जो कि बैंकिंग डोमेन में करता है। इसके पास ऐसा भी क्लाइंट है जो कि लेट्स से जो कि किस में और कर सकते हैं। इसके पास ऐसा भी क्लाइंट है जो कि ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में भी करता है, ठीक है? सो अशोक, आप हैं, सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. I can ओके, hear. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हम सब प्रॉपरली सब कुछ समझ लें, इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, तो नवीन देखिए, ये एबीसी Yes, sir. एबीसी एक कंपनी है जो कि आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसके Okay, पास sir. इसके पास डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स हैं जो कि हेल्थ केयर में करते हैं। मान लीजिए हेल्थ केयर में इसके पास जीएसके है जो कि फार्मा सेक्टर बनाती है, जो कि Yes, sir. दवाइयां बनाती है, ठीक है? इसके पास बैंकिंग में एचडीएफसी का प्रोजेक्ट है जो कि Yes, sir. हाँ, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में मान लीजिए कि इसके पास जो है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी में इसके पास मान लीजिए कि इसके पास इसके Booking पास system. इसके पास बुकिंग सिस्टम का है नहीं कि कंपनी का नाम, जैसे कि मान लीजिए इसके पास विवांता का प्रोजेक्ट है जो कि एक ओब्रॉय होटल्स का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए, ठीक ठीक. है? ठीक है, ओबरॉय होटल्स का प्रोजेक्ट है इसके पास, ठीक है? अब आप मुझको ये बताइए कि अगर आपके पास अब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स आपके पास एक तरीके के क्लाइंट्स हैं, थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज बन गई, तो आप उस बिजनेस के साथ बैठे तो नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो Sir. आप सेम काइंड ऑफ कस्टमर दोबारा ऐड करना चाहेंगे। तो आपके पास जीएसके का प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि Yes, sir. आपने और कस्टमर्स बनाने की कोशिश करी और आपने सिप्ला का और प्रोडक्ट कर लिया, तो अब मैं सिप्ला कहाँ पर लिखूं? सिप्ला डेफिनेटली हेल्थ केयर के अंदर आएगा, Yes, sir. Medicine. या Medicines. है ना? और फिर मान लीजिए आपने एक एक्सिस बैंक का और प्रोजेक्ट उठा लिया, एक्सिस बैंक का, ठीक है? Banking फिर service के अंदर आएगा.
हाँ, फिर आपने जो है इसका प्रोजेक्ट उठा लिया कि ताज होटल्स का प्रोजेक्ट और ले लिया आप, ठीक है। Yes, sir. सो सो ये हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी, ये आपके हो गए पोर्टफोलियो, बिकॉज यू आर कीपिंग द Okay, sir. Okay. सेम, बिकॉज यू आर कीपिंग द सेम काइंड ऑफ कस्टमर इन इट। Yes, sir. Okay. क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी चीज की मैट्रिक्स, पैरामीटर्स कि हम कैसा कर रहे हैं, हर किसी बिजनेस में मार्जिन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, तो उनको हम एक तरीके से एक साथ रखकर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हम Yes, जीएसके sir. को एक्सिस बैंक से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें जीएसके के बिजनेस में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सो वी कैन नॉट से कि एक्सिस बैंक में भी 10% का हो, उसमें हो सकता है 20% का मार्जिन हो, ओके। सो Yes, sir. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, दैट इज वाई वी कीप देम सेपरेटली। Yes, एंड sir. एंड इसको एक जो है अलग पोर्टफोलियो मैनेजर इसको मैनेज कर रहा होगा, इसको एक अलग पोर्टफोलियो इसको अलग मैनेजर से. कर रहा होगा, इसको एक अलग पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। सो Sir. एंड सो दिस हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी आर द पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी एबीसी, Yes. Yes, okay. sir. And now this GSK and CIPLA, what they are? They are the programs. Program. Yes, sir. Okay. I दे आर दी understand. प्रोग्राम्स। Yes, sir. अब जीएसके के जो है अब जीएसके के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। मान लीजिए कि जीएसके अब एक जो है जीएसके की अब बात कर रहे हैं हम, जीएसके की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसके जो है अब जो है एक ड्रग बना रही है, ड्रग 1, और एक और ड्रग बना रही है, ड्रग 2। अब इन दोनों ड्रग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो है क्या बोलते हैं, इसी कंपनी के पास है, एबीसी के पास, ठीक है। ABC के पास. सो एबीसी का, सो दिस ड्रग 1 इज कॉल्ड प्रोजेक्ट 1, दिस ड्रग 2 इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट। ये Yes, ड्रग sir. वन हो, ड्रग वन में मान लीजिए कि ट्रायल चल रहा है ऑन थर्ड लेवल, इसमें ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये दो प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास हैं। सो Yes. कंपनी इसको कैसे मैनेज करेगी? अब कंपनी इसको ऐसे मैनेज करेगी कि अब ये ड्रग 1 भी जीएसके का है, ड्रग 2 भी जीएसके का है। सो अब ड्रग 2 को अलग बाहर रखकर तो मैनेज करेंगे नहीं, ड्रग 2 को जीएसके के अंदर ही मैनेज करेंगे ना, बिकॉज ड्रग 2 जीएसके का ही प्रोजेक्ट है, ओके। Project, sir. सो नाउ नाउ आपको चीजें क्लियर हो गई, जिसकी हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी ये पोर्टफोलियो है, ये Portfolio. ये जीएसके, सिप्ला, ये सब प्रोग्राम है। और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल Project, कितने sir. भी प्रोजेक्ट चल सकते हैं, 10-15 प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, कितने भी आए वो Sir. वो डिपेंड करता है, जितना आएंगे उतना बड़ा बिजनेस है, ये है, ठीक है ना। Sir. Okay, sir. अब हाँ, अब इसमें अब एक और चीज थी कि इसमें जो है इसमें जो है क्या एबीसी, एबीसी तो खैर कंपनी है, इसमें ये जो पोर्टफोलियोज हैं, ये जो पोर्टफोलियोज है, क्या इसमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर इसमें प्रोग्राम के अंदर ही प्रोजेक्ट होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं था, डायरेक्टली भी इसमें प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसमें प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टली इसमें प्रोजेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक प्रोजेक्ट चला रखा है कि टू रिसर्च ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ओके। रिसर्च करने के लिए हमने जो है कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, इसका हमने एक करने के लिए एक और प्रोजेक्ट चला रखा है। पर वो जीएसके के अंदर तो हम नहीं डाल सकते, वो सिप्ला के अंदर तो हम नहीं डाल सकते, बट वो हेल्थ केयर के अंदर जरूर आता है। तो वो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट है डायरेक्टली, अंडरस्टैंड। Okay. So whoever the manager appointed as a research project manager, uh, those control only will take the operation on the GSK Cipla. What happening there? Research about the separate project is comes under the healthcare. या सेपरेट प्रोजेक्ट ऑफ रिसर्चिंग द रिसर्च, एक सेकेंड, रिसर्चिंग फार्मा, ठीक है। रिसर्च फार्मा ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के अंदर आ गया। अब नाउ व्हाट्स योर क्वेश्चन?
तो ये मतलब सेपरेट प्रोजेक्ट है ये, जो मतलब जीएसके सिप्ला, ये मतलब जो भी है और भी थिंग्स जो भी इसके नीचे जो प्रोग्राम्स रहेगा, उसका रिसर्च में रहेगा ये अलग से, हेल्थ केयर के अंडर डायरेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट। एज अ प्रोजेक्ट रहेगा ये, इसको जीएसके सिप्ला से मतलब नहीं है। एक्चुअली जीएसके, एज आई सेड, कि हेल्थ केयर का एक पोर्टफोलियो मैनेजर हो, ठीक है। ओके, रिसर्च, रिसर्च फॉर व्हाट सर? हाँ फार्मा का रिसर्च ये। हाँ। हम्म, नहीं, एक्चुअली जीएसके सिप्ला ये हमारे दो कस्टमर बन गए, ठीक है। अब अब हमने एक सेपरेट प्रोजेक्ट और चला रखा है अपनी कंपनी में, विच आर डूइंग द रिसर्च वर्क, द लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हो रहे हैं फार्मा सेक्टर में, या जो भी कुछ हो रहा है, टू टू सपोर्ट अवर कस्टमर वेल, जिससे हम अपनी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाएं और कस्टमर्स बनाएं और उनको बेहतर बेहतर सपोर्ट कर पाए। तो हमने एक ओके सेपरेट प्रोजेक्ट चला रखा है, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू जीएसके, दिस इज नॉट रिलेटेड ओके टू ओके। सिप्ला, बट दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। सो इसमें होगा क्या, इसमें जो एक हेल्थ केयर का जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, जो कि पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता होगा, और रिसर्च फार्मा का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर को। ऐसी सिमिलरली जीएसटी का एक प्रोग्राम मैनेजर होगा, वो रिपोर्ट कर रहा होगा पोर्टफोलियो मैनेजर को। सो ओके अब आपको चीजें क्लियर हैं, अशोक एंड नवीन? ओके ओके। यस सर, अब क्लियर है सर। हाँ, एक और चीज है इसमें, कि इसमें जो मैंने आपको बोला था कि हम उसी पे आता हूँ मैं। मैंने आपको बोला था कि हम इसमें प्रोग्राम में इसलिए डिवाइड कर प्रोग्राम को प्रोजेक्ट्स में इसीलिए डिवाइड करते हैं कि उनको हमको इंडिविजुअली मैनेज करना या इंडिविजुअली उन पे काम करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। तो अगर हम उनको डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो हमारे लिए काम करना इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर जीएसके दो ड्रग बना रहा है और हम दोनों ड्रग की सेम ही टीम रखेंगे और कोई अंतर नहीं करेंगे, तो हमारे लिए चीजें मैनेज करना आसान नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर या प्रोग्राम मैनेजर को कोई डिटेल चाहिए होंगे, कोई अपडेट्स चाहिए होगा, तो इट विल बी नॉट बी इजी टू मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट फॉर हिम, राइट। दैट इज व्हाई वी डिवाइड द प्रोजेक्ट। और उनको हम इसीलिए, ताकि उनको अलग अलग उन पर काम करने पे चीजें आसान हो जाएं, इसीलिए हम एक प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। यस ओके सर। हम्म। अब हम जो है पोर्टफोलियो को प्रोग्राम्स में इसीलिए डिवाइड करते हैं, टू अचीव द स्ट्रेटेजिक आउटपुट्स, टू टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कि हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमारी ऑब्जेक्टिव ये हैं डेट, कि हम जो है इसी हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से रखेंगे। क्योंकि अगर कंपनी चाहे तो सारे प्रोग्राम्स को एक ही जैसा भी रख सकती है, उसको क्या जरूरत है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो करने की। बट डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो करने की ये इसलिए जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए वी कैन नॉट कंपेयर। हम एप्पल को ऑरेंज ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हमको डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो रखने पड़ेंगे। और जो है मैनेजमेंट आसान होगा, साथ में स्ट्रेटेजी भी हम अच्छी बना पाएंगे, अगर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रखेंगे, अलग अलग पोर्टफोलियो रखेंगे। क्योंकि हर एक चीज की स्ट्रेटेजी अलग होती है। हम फार्मा के कस्टमर को अलग तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को अलग तरीके से करेंगे, राइट। सो आई थिंक वी आर नाउ completely क्लियर ऑन प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो। यस यस। यस सर। Okay, so now we will move forward to what is this project management. Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to satisfy project requirements. Simply, so we have to manage the project, and what does it mean? It means that we will be using whatever we have, knowledge, skills, tools, techniques, people, whatever we have, to satisfy the project requirements. सो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आ सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग अ बिजनेस केस टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट,
estimating resources and time, developing and implementing a management plan for the project, ये सब एक्टिविटीज इसमें आ सकती हैं। बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोग समझ गए कि जैसे कि वो जो है to satisfy the we have to satisfy the project needs and by using whatever we have, all the resources। ठीक है ना? बस इसमें और कुछ नहीं है, बस सिंपल ही है। और एक और चीज ये है कि प्रोजेक्ट्स इनेबल्स चेंज। सो व्हाई वी डू प्रोजेक्ट्स, एज वी हैव लर्न दैट प्रोजेक्ट्स आर यूनिक इन नेचर, सो दे मस्ट बी चेंजिंग समथिंग। हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि यूनिक होता है तो उसको कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा। सो अभी मान लीजिए कि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन इस करंट स्टेट में है। सो बाय एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेट में आ जाएगी, डिजायर्ड स्टेट में आ जाएगी। सो द प्रोजेक्ट विल टेक अ कंपनी फ्रॉम अ करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट। प्रोजेक्ट आर द